भी मैसेज भेजा था सत्संग चालू करने के लिए। दिव्या दीदी आपको होस्ट करूँ ना? हाँ Julie ji, Santosh ji, can you all hear me? I just want to check my audio, please. Yep, I can hear you. Can you all hear me? Yes, I can hear you. Yes, okay, fine. Great. Thank you, Julie ji. But you aren't Thank you able to very hear me, right? much. You are not able to hear me. Now I cannot hear you. Oh, I cannot hear you. Now I can Is hear. it? Okay, then is a problem here. Could be. Remove it and One see. moment. Let me take out this. Hello, hello. Can you hear me? Bluetooth बंद करो. Okay, Julie ji, अभी सुनाई दे रहा है? I can hear you. I mean, rather you speak. Can I hear? I can hear you. No. So you can hear me. I cannot hear you. So I'll have to call the mummy. Hello, hello, hello. So this is a problem. She cannot hear me. I cannot hear her.
कारीगर लोग खाली नीचे झाड़ू पोछा कर, कुछ नहीं सरकाना पड़ता है। Please do you can hear me? I can hear you. Can you hear me? Okay, yeah, now I can hear you. So I have to take this. तो दूसरे कान में क्या हुआ? ये लटकता है यार, पैंटी नहीं। Because your voice is soft with that one Okay. plug. Because that speaker comes down, I think. नहीं तो you have to hold the speaker and speak. ठीक है, करती हूँ adjust. Hold the speaker and speak. Can you do better? Is it better? No, same. So wait, एक मिनट for those. बसंती, मेरा रूम कर लेना जरूर। हाँ। फिर रूमी बाहर आएगा, फिर वो करना, वो बाहर जा रहा है। पार्वती साहब आए हैं? आए हैं तो जरा रूम में जरा नॉक करेगी प्लीज, नहीं तो रूम ही चला जाएगा, पिक्चर जा रहा है। हाँ तो साथ में मेरे को रूम ही चाहिए, वो पिक्चर जा रहा है, खाली इसे नॉक कर बस। ज्यादा कुछ नहीं का वो चिर खाएगा, खाली इसे नॉक कर। हाँ बस। Now just please check. I can hear you. You're too soft, but still I Stop. can No, hear okay. you. What I'll do, I'll change my headphone. 2 minutes wait. Only gone for a shower. Listen, I want rooming. Yeah. एक बेचारा रोमी कहाँ कहाँ भागेगा बेचारा रोमी. Can't hear you. Your voice is gone. Unmute. So you know what? He was very thrilled by. हाँ मैं DYL अभी नहीं बैठ रही हूँ Monday. He was pissed versus that night he celebrated. Pizza भी मंगाए. मम्मा मेरे सर के ऊपर नहीं बैठी रहे. And then today when your message came, I said नहीं जे बैठना है. Oh, कब सीखेगी ऐसे? आज सीखेगी. वो राह देखेंगे तो होएगा ही नहीं बाबा. सच्ची यार, really you're right. First I get my own computer. My problem is iPad. Rumi is telling me to buy iPad. I know my voice is echoing. I'll adjust it. I think So what's laptop yours? is better always. Huh? Laptop is Computer, always laptop, no? Yeah, that's right. So I'm buying that 1,20,000 का मिल रहा है यार. So expensive or what? Your laptop is that much? 45. 45 तो मैं कभी से खरीदती थी. 45. Yours is what? I don't know which they are saying. 1,20,000 Rumi is saying. Why you want to go for such costly one? You just have तभी तो to. मैं इतना देरी नहीं खरीद रही हूँ. नहीं, you have to go for a normal HP or Dell SSD wala, which is around 40-45.
Well, I'll do that. which has 1 terabyte also and 256 GB also. But go for SSD only. Don't go for FHD or anything. इस चक्कर में ना मेरा बहुत ये हो गया। नहीं बाबा इतना महंगा फोन क्यों खरीदना है unless you're doing something नहीं, then it's सच में। different. Maybe he Actually, wanted it for himself, that's why he said it. So that's why we're buying 2,40,000 का budget रखा है. He's done want mine. He wants may be his. wanting to use yours because he knows you will do it only on Mondays. That's why he wants the best for himself. He was that night he called pizza, you know. I said, oh, so mean you are, you know. Today again I told him I'm sitting. He's crying, he's saying, oh no. So sweet. हे भगवान बच्चे लोग. But in between you can just move around with him, no, while the satsang is going on. You know what? He doesn't give me this laptop because he does projects. No. I'm saying in between you can be with him, no, when the satsang is going on once in a while. He was happy, na, that you don't have to sit, or he was happy हाँ. because he doesn't have to give you laptop. नहीं, इसे नहीं laptop भी नहीं देना पड़ेगा, मम्मा के माथे के ऊपर भी नहीं बैठना अच्छा, पड़ेगा. okay. दोनों. Because keep asking him, okay. हाँ, मेरे को लैपटॉप दे, तेरा लैपटॉप दे. अच्छा, He okay. thinks मैं इसका सब देखेगी. अरे I don't even know anything. Tell हाँ, him तू to keep. देखेगी, मेरा कुछ भी नहीं दे. अरे नहीं देखेगी, I don't even know. So that fear is having, you know. Yeah, all kids are like Secrets मेरा मम्मा पकड़ेगी. बराबर. My daughter ने इतने पासवर्ड रखे हैं फोन पे, इतने पासवर्ड also. रखे हैं ना, हाँ. बाप रे. I said कभी इमरजेंसी होगा ना तू ही मरने वाली है, because neither I'll be able to open the phone, neither I'll be able to do anything. You are only going to die if you keep like that. Absolutely, you know. पर सुनते कहाँ हैं? That's what mama, you will not see, you know. I said, I don't know, Baba, why I you are said not. फोन का तो तुम खोल के रखो, बाकी व्हाट्सएप बंद करो, वो सब बंद करो, चलेगा, पर फोन का डायलिंग के लिए तो खोल के रखो. उसमें थोड़ी ना I'm going to see anything or check anything. हम लोग क्या करेंगे दीदी बताइए. पता नहीं. What I we'll don't do, know. you know, the kids don't understand, and we were not like this. We didn't have a phone only in the first place. No, but we were so transparent with our parents. They are That is transparent so while talking. They are transparent, but when it comes to phone, they are not. Yeah, even friend, what they are talking, close the door. Oh my God. वो कभी yes, they do. Uh, But if they are going for meeting or anything, they tell the truth and go. yeah, that of course. See, now they're going for. He's going for movie. So all that, yes. बराबर. But the rest of it. बाप रे, थक गए बाबा. आज वो सुबह से 5 बजे उठ के गई है कॉलेज. उसके बाद she came with me to Irla Prime Mall. उसके बाद she's again gone out with friend and still madam has not come back. She'll be so dead tired. She'll come and she'll eat my head. खाना दो. What's your dinner today? I've made Szechuan rice and I just have to mix the rice now क्योंकि rice थोड़ा एकदम dry होएगा फिर डालूंगी तो you know वो टूटेगा नहीं. That's why. अरे 6:50 हो गया है, कोई नहीं आ रहा है आज. क्या भाई, क्या बात है? आज सिर्फ हम दोनों है सत्संग में. म्यूजिक चला ही है. ये स्टोन लेके रखा क्या? हाँ, मेरा वही है, संजीव जी वाला ही है. अच्छा, नॉर्मल स्टोन ही रखा है क्या? हाँ. ओके. Last time it's gone for the retreat, no? That one. मेरे पास स्टोन नहीं है. So, I have one gratitude stone. एक है यहाँ पे. दो चाहिए, छोटा एंड बड़ा. एक छोटा सा gratitude stone. हाँ, और ऐसा और एक रखो. This will do. एक और नहीं है मेरे पास अभी. रास्ते से लेके आना पड़ेगा स्टोन. It's a very good exercise. Rumi, this headphone is not working. What do you do? Please connect this to your, you know. Julie ji cannot hear me. इसलिए मैं ब्लूटूथ नहीं यूज करती हूँ. ब्लूटूथ से ना दिमाग खराब होता है. कभी कनेक्ट. अरे आप लोग यूज करते हो करते मैंने दिया. क्या? आप लोग को मैंने देखा यूज करते हुए. मैं तो ये वायर भी बहुत अच्छा. I use the normal hands free only. No, Rumi, this you connect your.
I use not Connect here. free. Like this, let अभी it be. लिया है speaker. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Just give me 2 minutes. See, this I have taken just now recently. This Bluetooth, because वो योगा करने के टाइम पे ना ये हाँ. वायर वाला है ना, नहीं होता है, जमता नहीं है योगा करने के लिए. वायर वाला इधर से उधर होता है फिर, तो उसके लिए मैंने ये वाला लिया अभी. अच्छा, आपको म्यूजिक कहाँ चल रहा है पता नहीं मुझे. Some music is going on. Okay, now this you connect. आपका कोई म्यूजिक चल रहा है क्या? 1 minute wait. Again, I got clicked. Can you hear me? Can you पता hear me? नहीं किसका म्यूजिक चल रहा है. तुम्हारा कोई म्यूजिक चल रहा है मीरा? No, no. तो मेरे इसमें म्यूजिक आ रहा है. But can you hear मुझे me? भी नहीं आ रहा है, आपको खाली आ रहा है शायद. हाँ, मेरे ब्लूटूथ में म्यूजिक आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है. अभी इसमें आप म्यूजिक चालू करो. करती हूँ 1 मिनट. Julie, you can hear me? Yes, अरे Okay, so it's good now. My voice is clear. yes. Okay, good. Now music also I can hear. Okay. Whose music you can hear? Some music you put na. No, I have not put any music. तो इधर आ रहा है music. वही तो मैं बोल रही हूँ, मुझे भी म्यूजिक सुनाई दे रहा है ब्लूटूथ में से, पर वो कौन सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है पता नहीं. Rumi, this is not my music which is playing, no. I have not fed anything, no. She can hear some music. But it's not our music, right? No, this isn't ours. This is not ours, Julie, because I'll never keep any Even music. I don't play this music, so even I don't know from where this is playing. Now what to do? How do we figure out this? That's what I'm trying to figure out. I am trying to figure out. How's it now? Can you hear me? No, wait Yeah. 1 minute. I have the Bluetooth, so I'm not able to hear you. 1 minute. Again, the music is there, no? Can you speak? Yeah, tell me. I can hear That you. music is gone, I think. See. अभी नहीं आ रहा है म्यूजिक का आवाज. संतोष जी जरा ये मिस्ट्री सॉल्व कीजिए. आपको म्यूजिक आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा है. अभी नहीं आ रहा है ना? हाँ. आपको आ रहा है? नहीं, मेरे को भी नहीं आ रहा है. 1 minute, I'll just check out something else. कहाँ से था ये म्यूजिक आ रहा है, but I don't know. अभी नहीं आ रहा है हम लोगों को. Can you hear me? Hello? Yeah, very आपकी clear. आवाज आ रही है. Yeah. अच्छा, अभी वो म्यूजिक बंद हो गया. Now can you hear this music? Yeah. हाँ, ये अपना म्यूजिक है. चलो. Right. So we are done. Yeah. Great. Should we admit people? Yeah. Okay. And do we have to admit only, Julie? Can't we do that all Actually, setting? एक मिनट. Actually, उस Rumi, दिन did वो you- कोई घुस गए थे ना लोग, अच्छा. इसलिए हम लोग ऐसा एडमिट का रखा है ताकि कोई भी ना घुस सके. Okay. ठीक है. That's why. So I'll take care of that. Not an issue. Okay, fine.
नहीं मैं भी कर सकती हूँ वैसे, हाँ because you do other things, so admit part I'll do. the voice is clear मेरा. Yeah, your voice is clear. That means this Bluetooth is very strong. मैं दूर से बोल रही हूँ तो भी आप लोग को सुनाई देगा. And very clear, you know. ये लेकिन मुझे इसका आवाज नहीं आ रहा है. आपको नहीं आ रहा है जूली जी का? नहीं, म्यूजिक म्यूजिक तो मुझे Music भी का? नहीं आ रहा है. अभी मैंने बंद किया ना, आपके साथ बात कर रही हूँ इसलिए. अब अभी देख, अभी सुनाई देगा. आ रहा है. हेलो हेलो, ऑल क्लियर? Yes, yes, we can hear. आप स्टोन लेके आइए जूली जी. तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास एक ही स्टोन है. एक बड़ा स्टोन है, एक छोटा है. ऐसा चलेगा होगा? दो, एक बड़ा एक छोटा चाहिए हम लोगों को. ओके. नहीं तो मुझे बाहर से लाना पड़ेगा. Keep one stone. It's a very beautiful exercise. I can't tell you. अलाज जी, उषा जी, प्लीज एक स्टोन जरूर लेके आइए. It's a very very beautiful exercise. मैसेज जरूर कीजिए. हाँ. Please bring a stone. It's a very very nice exercise. म्यूजिक बंद हो गया. हाँ हाँ, वो टाइप कर रही हूँ ना तो म्यूजिक बंद हो जाता है. ओके. रास्ते से लेके आओ क्या? Yeah, it is a very beautiful exercise. What it is, you know. Go and get it. It's lovely. You love it. ओके. It's worth it. Still there is time, so go and get it. हाँ, वो ही करती हूँ ढूंढने के लिए. Yeah. हेलो संतोष 7 अखाड़े. बज गए हैं. It's already 7. 7. But come back fast. Hello, Bindu ji. How are you? Come back in 1 minute. I'm जल्दी good. लेके I'm good. संतोष Get अखाड़े जी, two आप stones. आपका डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर सकते हैं क्या, जो आपने मनोज जी का लगाया है? नहीं दीदी, वो मनोज जी के आईडी से करता हूँ ना मैं. अच्छा, तू बोलतोय का आपला संतोष आहे? अच्छा, ठीक आहे. इथे संतोष अखाडे लावलं. अजूनपर्यंत माझं नाव पूर्ण नव्हतं माहिती तुम्हाला. हा, आ मला रहा वाटलं है कोण तुम्हारा पार्टिसिपेंट्स आहे रे. ठीक आहे, मग इथे मनोजजीचं आयडी आहे तर मनोजजीचं नाव असायला पाहिजे ना? नाही, नाही, दीदी बोलतात की जेव्हा हे करतात त्यांचं नाव आलं पाहिजे. ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. ओके, नहीं तो बिंदु मालूम नहीं पड़ता है कळलं कौन है. कळलं, या.
Yes, we'll start the pledge. Yeah, come. We have a great task ahead of us. The commitments we have to our own lives and to the lives of everyone around us. This can only be accomplished Not by focusing on the task, but by focusing on ourselves. to allow ourselves to be truly happy and usable. People can only use usable material. We don't ask them to use our teachings. We shall allow ourselves to be used by truly being ourselves. And enjoying each moment as if it was the last. We pledge to give nothing but our best. This includes ourselves, our love, our possessions. Our world, our honor, and our citizenship. We do not do this to elevate ourselves above others Or to belittle ourselves. We do this recognizing that it is the opportunity to discover the best in us. My only true personal gain is discovering the best in me. To discover my ability to be with everyone and everything around me. This is my test, my path, my goal. I represent life. No one is higher or lower than me. No one is more valuable than another. I will not make anyone my slave, nor will I submit as a slave to anyone. In true partnership, I shall discover myself in you, in everyone. This is my pledge. This is my pledge. This is my pledge by Puja Guruji. Yes, coming up with the rules. So I think most of them who are here have already put the alarms manually from 8 a.m. to 11 p.m. So we recommend for you all to keep a Joy Shop diary and a pen handy next to you to make a note of any important things you all want to make a note during the workshop or Joy Shop, sorry. Yes, so if there are any slides to be read during the Joy Shops, then please do so. So sometimes we may ask you to write some answers in the chat box. Please be active and please do so. Sometimes we will ask you to speak or sing, but please keep your mics on mute and you can do so today. Sometimes we may ask you to stand up and do certain things. So please do that activity. It will shift the energy. And yes, after today's session, you might have lots of question answers too. You can ask Sanjivji. So please switch on your video to have a heart-to-heart connection with each of you all. It will be lovely. And yes, please keep your mics on mute so that we don't get background sounds and it doesn't disturb the trainer as well. So as we all know, all satsangs are also expressions of DYL.
So you get one video in Hindi and in English every single day. It's not 12 months, but every day. Now you will get 365 videos in 365 days. Wow. So now we recommend that you can do one joy shop every day. Why this, Julie Ji? I wonder why this is there. We now also have one joy shop almost every day. Yes. correct. Yeah. So you need, it's called the Design Your Life series so that you can create your own life. And we suggest that you need to do at least 4 full joy shops once in a month. In other words, at least 1 full joy shop every week. So like today we have musical satsang. Every Monday we have that. And every Wednesdays we have practical tools. So we always tell you to come with your problems and go back with your solutions. And you can ask whatever questions you want, you can ask Manojji directly. Every Thursday we have parenting workshop, and it's a very, very beautiful thing. That is a relationship between mother and child, also relations in every relation you have in your family. And every Fridays, we have synergy with great successful personalities. So every Tuesdays and Saturdays, we have basic workshops or repeated also, like gratitude, self-love, just let go, anger, etc. Every Sunday, new topics by Manojji. Oh, I hope your Joy Shop diary is ready. So series 1, the ones which are completed are first the base after SSY, that is magic of gratitude. Then is self-love, Just let go, overcoming anger and disturbances, make or break your habits, money, wealth, and abundance. the art of harmonious relationships, Money, money, money. relationships, 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 Manifesting richness. and wholesome communication. So we have 3 joy shops for money and 3 for relationships. So by now you would be knowing how important these 2 things are. So next, followed by mind your weight and health. And then followed with series 2, we have science of leadership, and the same is going to be taken tomorrow. And heal yourself from all ailments, from cough to cancer. Then we had power of consistency. Thoda karo, roz karo. Do you know yourself? The other is also true. It's a magical world. Yes, I think this joy shop just went yesterday or day before. It's a magical world. Then coming up, we have 10 eternal commandments in August. From confusion to ultimate clarity. Then we have 7 colors of the rainbow, which is related to 7 habits of highly effective people. This also we just recently took. Followed by 7 mystical laws of the universe. Now, this is based on 7 laws of spiritual success by Deepak Chopra. So to get the best results from Design Your Life series, we recommend to do 1 full joy shop every week and log in for 5 to 15 minutes before dinner or during dinner time. So it will benefit you a lot. Yes. So yes, we also recommend you that even though you do not know the language, please do attend both the joy shops, be it in English or Hindi. So I hope you all are watching the videos which Julie ji said every single day in Hindi and in English before going to the washroom or in washroom. That's what we recommend. Yes. So how many of you are sharing what you have learned in a line or 2 with your buddy or guide or in the layout? Then please write me on the chat box.
So if you want to change the fruits, you need to change the roots. And that is how you can do that, by attending your joy shop every week, every day, writing your Leah. All these are changing the roots. Yes. So the same way we need to change ourselves and work on ourselves if we want lovely fruits from within. Absolutely. And the three most dangerous words in the English language, as we all know, the I know that. So when we come here with I know that, then we might not get any deeper knowledge or any more deeper understanding to anything. So we all need to repeat, repeat, repeat. Repetition is a key. And why to repeat? Because there are 7 steps to learning. First being, you need to know about it. So after you know about it, you understand it. And then you feel it. And after you feel it, you can share about it. Then you can experience it. Then you start living it. And then we become one with it. When your thoughts, words, and actions are in alignment, then we become one with it. So the same way, if we see it from ground level or first floor view, then the view is not an overall view. We don't get a bird's eye view. But as and when you go higher and higher, the more deeper and deeper we will be able to understand. So before we start, how many of us want to get 1000% from this joy shop? Who wants 1000% today? Whatever we are doing every day, whatever we are doing, no matter what, who wants 1000%? If you acknowledge, if you type, you're not telling anybody, you're only telling your own mind. You're making clarity for your own self. Yes, yes, Varsha. Lovely, Varsha. Yes. Okay, so for that, we need to be like the best student. And what do we mean by the best student? That means you can wear your headphone, switch on your videos, reply on the chat box, write, ask questions, write down whatever learnings you're getting from the satsang, etc., etc. So if it is your first time, please write your WhatsApp number that if it is first time and who has referred you. So you all can write that so that somebody will connect with you and let you know our future programs. Yes, so if you would like to get more details on our workshops, then please do write down your WhatsApp number. Yes. So welcome everyone. A warm welcome. Yes, Julie ji. Yeah, I think Okay. Sanjivji is yet not come. Yeah. So till then, what we can do is, yes, so how many of you, I would just be asking a few questions. So you just need to write I on the chat box, okay? So how many of you have done Magic of Gratitude? How many of you have done the Magic of Rupali ji. Gratitude? If Yes, you don't Rupali answer, ji. that means you've not done that joy shop. Okay, So we let are me at put least, mine. Even I have done, Julie ji. Okay. yes, Take so my we are attendance 15 also. of us. Yeah. Sonal ji, yes. Come on, Rakesh ji, Rajiv ji, Usha ji, everyone. Please reply on the chat box. Alhad. If you all have done Magic of No, Rajiv ji Gratitude. is saying no. Rajat ji is saying no. Okay, Rajiv so ji is Rajiv ji and who else? no, only no. I was admitting Okay, Rajat. so Rajiv ji, 6th August is Magic of Gratitude. So if you can keep a reminder on your phone, then you can attend it at on 6th of August. That is, okay, Alhad says Magic of Marriage. So Magic of Gratitude, I asked. Magic of Marriage is a 4-day residential workshop, which is going to start, I think the next one will be in November, around 14th. Okay, no problem, Alhad. No problem. Okay, so how many of you know
in which design your life group you are there? How many of you know in which design your life group you're there? There are numbers from 1 to 10. So which group, which number are you in? You can please write that down on the chat box. Okay, 1, 10, 3, Ji, 3, 4, Varsha ji. 4. Okay. Lovely. Yes, come on, everyone. I want everyone to answer. 3. Lovely. Great. Chalo, this is one wonderful step. Julie ji, Now the in the second step. meantime, I'll take the question. आप संजीव जी को phone कर लीजिए. So I'll take. Actually, वो out of India है, तो मैं try करती हूँ. So WhatsApp कर लीजिए. So I just wanted, Julie ji is back. I just wanted to tell you all today is Shravan ka first Monday. And I hope you all are going to make it very special for you all because it's this month is full of Bhakti Bhav. By itself, it is celebration, Tyohar, Shravan ka Mahina. So it brings that mode of celebration. And today, I hope everybody's got 2 stones. All of you all have kept 2 stones. 2 पत्थर चाहिए आज हम लोगों को, any shape and size. I hope everybody is ready with the stones, any shape or size. It's a very, very beautiful exercise. So it will really help you all a lot. Just keep 2 stones handy till Sanjeev ji is back. Yes, Salaji, beautiful, lovely, superb. And I hope everybody can reply if you all are having the stones ready, like how Allah replied. It will be really very good if you all just keep that stone ready. And it's a very beautiful exercise, okay? So Julie ji is just finding out if Sanjeev ji, because he's not around. Yes, so the rest of you all, please tell me if the stone is ready, like how Allah ji replied. Could you all tell me if your stones are ready? Any shape, any size, but just keep 2 stones ready. That's all you all have to do, all right? So it's a very beautiful exercise. Okay, Purushottam ji, you and I were together only doing this exercise. Yes, Purushottam ji. Yes. Purushottam ji, Manoj ji wants you to come for the scope camp. He told me to specially give you a call because it's been a long time. So 18th to 21st. No, he's not 18 to picking. 21st. So tell, August. I'll try. Can I try in between? Yeah, yeah, definitely. Oh, he's come. Okay. He's come. Great. How come I'm not able to see? Okay, yeah. So once again, just who have just joined in, I hope your stones are ready. 2 stones. We just need 2 stones. Any shape, any size. And it's a very, very beautiful exercise. Yes, Julie ji, over to you. Abhi karo. Yeah, Hello. Sanjeev. Yes, Sanjeev Yeah. ji, welcome. Hello, everybody. Yes, boss. Yes, Yes, boss. we can hear you. Can Oh, you good. hear us? Very good. Yes, yes. Can you hear me? Yes. Yes. I can hear you. Okay, great. Wonderful. So great. Hello, everyone. Sorry for the delayed start. I'm on the road and kind of little hard to get internet connection where I am, because usually the more beautiful a place is, the less the connectivity. And Show us trust me, around. Sanjay bhai, show us around. yes, I will, of course. Okay. So, so this actually can be our silent prayer this morning as we take in this scenery and the view and the vastness of the universe. Here we go.
I think you have to No, remove that it's blur blur. part. Yeah, remove the blur. We cannot Oh, see. okay. Filter blur. Okay, gone. Yes. Oh. Wow, lovely. So this is Atlantic City Beach in New Jersey, and the vast, as good as infinite waters of the Atlantic Ocean lie before us. And you can see a lighthouse in the distance, maybe. What's the time there, Sanjivji? What's the time there? It's almost 10 a.m. 10 a.m. Right. So it's a beautiful, quiet. I was actually on the beach to start the call, all the way in the sand near the water, but there the connectivity is even less. So I couldn't connect from there at all. So I had to walk back away from the ocean towards the boardwalk. And out there in the distance, what you can see, that building which is kind of jutting out almost into the ocean, that's called One Atlantic. It's like a convention center. Did that zoom in? Yes. Yes. Okay, yeah. So it's almost, when you are in that building, because of that curve and all that, you feel like you're in a ship, because it's all full glass on all sides and the ocean is right below you. So especially in high tide. So this happened to be the venue that my daughter had chosen for her wedding about 10 years ago. So Karishma's wedding was in this One Atlantic location inside that glass building, and really felt like we were on a cruise ship. So that's another reason that draws us back to this place. And just, it's a Monday morning, so it's very quiet. It's all the weekend holidays have left already. And but then as you turn around, you end up in full view of all the skyscrapers and casinos that line Atlantic City. And there's the Tropicana, Caesar's Palace, and Bally's is over there, and somewhere behind that is the Hard Rock Casino. And yeah, you can probably see that, the Hard Rock Casino over there. And this is, in front of this here is the boardwalk. It's like a wooden pathway along the beach where you can ride bicycles, and you can, आप साइकिल चला सकते हैं, स्केटबोर्ड चला सकते हैं, चल सकते हैं, स्कूटर, स्केटबोर्ड सब लेके लोग निकल पड़ते हैं. आज सोमवार है तो कम लोग हैं, लेकिन कल तो बहुत भीड़ थी यहाँ. तो सारे रेस्टोरेंट है, शॉप्स है, खाने को, आइसक्रीम, ये वो, पूरी जगह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आनंदमयी जगह है. और आज का जो ये हमारा सत्संग है, उसमें हम, आपने शायद वो डेविड कॉपरफील्ड या दूसरे जादूगरों को कभी देखा होगा. तो बड़े बड़े दृश्य और बड़ी बड़ी चीजों को ये गायब कर देते हैं. किसी ने देखा होगा अगर अपने YouTube पे या किसी टीवी चैनल पर, कि वो सारा का सारा एक जंबो जेट, लोगों के सामने, नजरों के सामने से एक जंबो जेट खड़ा है, और पूरे लाइव ऑडियंस के सामने ये जंबो जेट 1 2 3 और गायब हो जाता है. और इसी तरह से एक पूरी ट्रेन डेविड कॉपरफील्ड ने गायब की थी. लोग खड़े हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, और और ये पूरी ट्रेन गायब हो गई. और इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने ये जो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो आपने देखी होगी, तस्वीरें देखी होगी या खुद देखी होगी, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने जो एक आइलैंड है, वहां पे सारा ऑडियंस बैठा हुआ है. और
और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते देखते लोग देख रहे हैं, उसी को ताक के देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और 1 2 3 और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब। ये ऐसी कलाकारी जादूगर Wow, करते this हैं। is so unbelievable. Yeah, it is amazing. And it is all work of you know creating an illusion. एक illusion ऐसी बना देते हैं कि आपको लगेगा कि वो गायब हो गई, असल में तो गायब नहीं होती है, लेकिन एक illusion क्रिएट करते हैं बहुत ही एडवांस टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी सारा यूज करके, कि आप पूरे तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, जो ट्रेन थी वो गई, वो प्लेन था वो गया, और या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी तो वो गई। तो आज हम उससे भी आगे बढ़कर एक जादू करने वाले हैं। Wow. वाओ, या उससे लाखों भी रुपए आगे। अटलांटिक, लाखों रुपया खर्च करके आप अटलांटिक गए, हमने तो बैठे बैठे देख लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठे बैठे देख तो लिया ही, लेकिन इसको हम इस दृश्य को जो दिख रहा है वो पूरा हम गायब करने वाले हैं। वाओ। तो जादू ये है, तो दिखा तो दिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसको अनदेखा करेंगे या नहीं दिखेगा उसको, that is even the bigger trick, the even bigger magic. It's not actually a trick, it's pure magic. It's actually that. तो वो मैजिक भी आज हम अनुभव करने वाले हैं। तो given all the schedules and the travel and all that, we have only about an hour. What time is it? It's about 7:30 now. 10. So we have about an hour and 15 minutes together in which to go through this process and this magical process. And so, yes, so please pay attention and enjoy and participate fully. पूरी तरह से जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत ही मतलब 2 कानों से नहीं, पूरी आंख कान सभी यहाँ पर attention, full attention, and just really look, because ये जो एक समझ है या एक जादू जो है, उसको समझने के लिए, देखने के लिए, जो हमने बरसों से सीखा हुआ है, हम जो भी हमारी उम्र है 30 40 50 जो भी है। You're in America. Speak Yeah. English. Well, my audience, I'm speaking to my class and they are all in India. And What class? it's a meditation class. Okay. Yeah, you can say hello to all of them. Hi, what's your name? My name is Wilma. and Wilma. But I haven't been to, are you from India? From India, yeah. Haven't been there yet. Haven't been there yet, but you can meet a lot of Indian friends in one go. You can say. I just had to. No, bust my chops a little. That's it. No problem. I understand. I worked at a hospital, but a lot of the Filipino nurses are Yeah. nurses from Philippines, and they'd all get around me and on the elevator and start speaking Spanish. You're right. Yeah. English. English. Yeah, if I was talking to you, I'd speak in English. But Sanjay bhai, tell a hello from India from all of us. A big hello from hello India. from India from all of them. Hello. Okay, have a nice day. You too. ये कमबख्त दुनिया में इंग्लिश में बोलता हूँ तो आप लोग कहते हैं हिंदी। और मैं हिंदी में चालू हो गया तो ये मुझे अब अमेरिका में इंग्लिश में बात करो। Anyway, that's life. No big deal. So मैं ये कह रहा था कि पूरा ध्यान जो हमने 20 30 40 सालों तक जो सीखा है, समझा है, उसको टू अनलर्न, वो सीखा है उसको अनलर्न करने के लिए
ना सीखा हुआ करने के लिए थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और उसको अनुभव करने के लिए पूरी पूरी तरह से यहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। और जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत ही बारीकी से सुनना, बारीकी से समझना, और बारीकी से जो मैं कहता हूँ उसके साथ रहते हुए आगे बढ़ना। तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह, देखिए जादू होता है तो बच्चे बनना पड़ता है। जादू देखने के लिए आप अगर बहुत महान, बहुत कलाकार, बहुत विद्वान बन के जादू देखेंगे तो कोई भी जादू आपको, कोई जादू लगे इसमें क्या है, ये हाँ ये ऐसा है, वो तो मजा नहीं आएगा। लेकिन बच्चे बनकर अगर जादूगर होता है तो बच्चे जो होते हैं वो जादू होने से पहले ही तालियां बजाते हैं, अपनी सीट पर इतने एक्साइटेड होते हैं, इतनी इतना आनंद होता है जादू होने से पहले ही। तो हाँ, बच्चे लोग जोरदार तालियां हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली। तो आज के जो जादू के लिए जोरदार तालियां। तो ऐसे बच्चे बनकर रहना दो दो तरह से, एक तो आपका एंथुजियाज्म, और दूसरी बात है ये अनलर्न करने के लिए हमें एक नादानियत को जागरूक करना पड़ेगा, एक इनोसेंस, एक ओपन माइंड। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, उसके ना कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई आइडिया है, ना कोई बिलीव्स है, ना कोई ओपिनियन है। और वैसा जब होता है बच्चा, उस अवस्था में उसको सभी कुछ जादू ही लगता है। आप देखेंगे किसी न्यूबॉर्न बच्चे की आंखों में, तो वो एक इट्स अ कंप्लीटली, these are eyes of wonder, these are eyes of wonder, full of wonder. Everything that they see, everything that they hear, wide-eyed. They have no words to even describe, they have no words to even put words in the question. There is no question, it is just the direct raw experience of whatever the world is giving them, the sensory, the sound, the sight of the mother, the sound of whatever, it's the first time. तो वैसी अवस्था में आपको आना है, जहाँ पे आप जितना भी आप जानते हैं उसको एक साइड पे रख देना। ये ये सत्संग खत्म होने के बाद चाहे तो उठा लो, चाहे तो वहीं साइड पे रखा है उधर साइड पे ही रख दो, कोई, दैट इज इवन बेटर, वो लेना ही नहीं वापस। स्टे इन दैट स्टेट। लेकिन अगर बहुत लगाव है उन बातों से तो फिर बाद में ले लेना उनको, लेकिन फिलहाल 1 घंटे के लिए उसको साइड में रख देना। और बिल्कुल बच्चे की तरह जो है वो उसको असलियत से, बिल्कुल एक ओपन आइड वंडर की दृष्टिकोण से जो भी मैं कर रहा हूँ उसका अनुभव करते जाना। तो मैंने सभी को कहा था कि 2 पत्थर लाने हैं आज इस सत्संग में, तो 2 पत्थर लाए हैं क्या, छोटे छोटे सभी? यस, Yes, so we've एवरीवन been हैज? reminding you that please bring 2 stones, any size, any shape. I hope you all have kept it ready. We've been हाँ, telling you छोटे all 2 on and on. पत्थर सभी के पास, ओके Yeah. ग्रेट। अगर नहीं है Yes. तो जल्दी से जाकर 1-2 पत्थर, कहीं से भी 2 कंकर से थोड़े से बड़े पत्थर, हाथ में जो ऐसे फिट हो जाए वैसे छोटे पत्थर ढूंढ के ले आइए और अपने पास रखिए। तो तो ये सारा जो प्रयास है वो ये प्रयास है सच्चाई को जानने का, सच्चाई को जानने की प्रयास है। तो जादू 2 तरह के होते हैं, देखो। एक जादू होता है कि जो सच है उसको कैसे भी मरोड़ के ऐसे घुमा फिरा के प्रस्तुत करो कि वो सच झूठ बन जाता है और झूठ सच बन जाता है। वो एक तरह का जादू है। सच झूठ बन जाता है और झूठ सच बन जाता है। क्योंकि वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो गायब कर दिया, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो असल है, सच सच है, सामने है, लेकिन लगता है कि नहीं है, तो वो सच जो था वो झूठ बन जाता है। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे जो दृश्य है वो सामने दिखने लगता है, मकान जो भी है, तो वो झूठ जो था वो नहीं दिख रहा था, वो आगे दिखने लगता है। तो वो सच झूठ बन जाता है, झूठ सच बन जाता है। वो एक तरह का जादू है। दूसरा जो मैजिक है वो उसकी विपरीत है, ऑपोजिट है। उसका विपरीत जादू क्या है? विपरीत जादू ये है कि जो हम ये देख रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, उसे हमें जानना है।
what is the truth about what we experience in reality? What is the truth about this reality that is in front of us? तो बुजुर्गों ने, विद्वानों ने, गुरुओं ने, सब ने बहुत सारी बात कही है कि जगत मिथ्या, कि ये जो दिख रहा है वो नहीं है, माया है। तो ये सच है कि ये माया है, तो इसमें हम ऑपोजिट में जा रहे हैं। जो ये मिथ्या है, जो झूठ है, उसकी सच्चाई क्या है वो हम देखेंगे। और जो सच्चाई है दुनिया के बारे में, सच्चाई है जो इस संसार की, उस जो हमें लगता है सच्चाई है, वो झूठ बन के नजर आएगी। और जिस झूठ को लेकर हम जीते आए हैं कि ये सब मैं जो देख रहा हूं वही सच्चाई है, ये झूठ जिससे साथ हम जीते आए हैं, वो झूठ सामने नजर आएगा और सच्चाई में बदल जाएगा। तो ये ऑपोजिट जादू है। तो इसको समझने के लिए हम प्रश्न ये है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है जो हमें दिखता है, जो सुनाई दे रहा है? क्या ये ही सच है या इससे भी कुछ आगे और बढ़कर सच्चाई है जो हमें आम तौर से नहीं समझ में आती, नहीं दिखाई देती? तो इसी के लिए एक ये प्रयोग जो हम आज करने वाले हैं एक साथ में मिलकर, ये जो 2 पत्थर वाला प्रयोग, वो अभी देखते हैं सच्चाई। ये जो पत्थर है आपके हाथ में, उसकी सच्चाई क्या है? और जो पत्थरों की सच्चाई है, वो समझते समझते ये दुनिया की सच्चाई भी आपको समझ में आएगी। और देखते ही देखते ये ओशन, ये दरिया, ये अटलांटिक सिटी के मकान गायब हो जाएंगे। Okay, so everyone is ready? Yes. Okay, so please settle down. So up, sit down in one place. 2 stones, you have 2 stones, very good, wonderful. Everyone, if you have 2 stones, yeah, just show me your 2 stones on the video. You can turn on the video and show these 2 stones. Okay. Or very nice, beautiful, 2 stones. A lot of people have 2 stones. राकेश जी 2 चाहिए, 2 पत्थर। 2 है? हाँ 2 है, 2 है। हाँ, एक ही हाथ दिखाई दे रहा था। ओके, हर एक के पास 2 पत्थर होने हैं। Everyone has 2 stones. Beautiful. Some people have some beautiful stones, some people have ordinary stones, but any stone is beautiful and wonderful for this experiment. Ready? Okay. तो अभी ये पत्थर को लेकर हम उसकी सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं। तो उसकी गहरी से गहरी सच्चाई क्या है, उसके तरफ हम जाएंगे। तो एक पत्थर साइड में रखिए और एक पत्थर अपने हाथ में रखिए। हथेली में ऐसे हाथ में रखिए पत्थर, जैसे मैंने रखा है ये। हाँ, एक हथेली में हाथ में रखिए। ओके, अभी अभी मैं अगर आपको पूछूंगा कि आपके पास हाथ में क्या है, ये हाथ में आपके क्या है, तो आप कहेंगे एक पत्थर है। यस, कहेंगे पत्थर है। यस, पत्थर है। Okay, so one of you please unmute. Maybe Deepak Jain, if you can unmute, then I can just have a question answer with you. You answer on behalf of everyone. Okay, And yeah. I am audible. So yeah, I can hear you. Okay. Okay. तो ये आपके, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि दीपक जी आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक मार्बल का टुकड़ा है, पत्थर है। एक पत्थर है। ओके, आमतौर से आप कहेंगे एक पत्थर है। तो what is present in your hand? क्या मौजूद है इस वक्त आपके हाथ में? क्या मौजूद है? एक पत्थर, एक पत्थर मौजूद।
एक Yes. पत्थर मौजूद है. Yes, and as I'm talking with Deepak, आप अपने आप को उसी कॉन्वर्सेशन में, आप अपने नाम से, आप उसमें आप इमेजिन करिए कि आप ही बोल रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ. सो हर एक जन जो भी बोल रहे हैं वो उसको देखते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे. तो क्या मौजूद है? एक पत्थर मौजूद है. करेक्ट, एक पत्थर मौजूद है. पत्थर और मौजूद। आमतौर से हम कहेंगे कि ये सच है, ये एक पत्थर मौजूद है, कोई इसमें कोई शक नहीं है. तो असल में क्या मौजूद है, उससे हम पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज रियली प्रेजेंट. तो थोड़ी सी और गहराई में जाकर हम देखेंगे कि क्या मौजूद है. तो पत्थर तो एक नाम है, या एक नाम हमने एक चीज को दे दिया है. ओके, एक चीज को एक नाम दे दिया है. तो ये नाम तो मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद है, लेकिन पत्थर तो सिर्फ एक नाम है. तो मैं और बारीकी से अगर मैं पूछूंगा एक अगले स्तर पर, कि आप जैसे मान लो 3 साल के बच्चे हो, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको पूछूंगा कि क्या है बेटा, आपके हाथ में क्या है? टॉय है, टॉय। टॉय है कहोगे, या कुछ तो है, कुछ है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है, कुछ तो है मेरे हाथ में. अच्छा, जब इसके आगे मैं पूछूंगा कि क्या मौजूद है, तो आप ये जो मौजूद है ये कैसे पता चलता है आपको कि आपके हाथ में कुछ सेंसेशन है? आप उसकी तरफ देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा है. आप उसको ऐसे हथेली में रखोगे तो उसका थोड़ा सा वजन है, एक वजन का महसूस हो रहा है. तो हम बारी बारी देखते हैं कि असल में क्या मौजूद है, असल में क्या मौजूद है. हम कहते हैं कुछ मौजूद है, पत्थर मौजूद है, सच है, ये गलत नहीं है, लेकिन असलियत क्या है? व्हाट इज रियली प्रेजेंट? तो आप 5 सभी, सेंसेस, ओके, हाँ, 5 सेंसेस जिनसे मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। राइट, हाँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. वेरी गुड. तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करिए, पत्थर को हथेली में ऐसे ऊपर रखिए, और मैं अगर पूछूंगा, अभी मैं अगर पूछता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आंखें बंद है और हथेली खुली हुई, तो और मैं पूछूंगा, भूल जाए कि आपने पत्थर रखा था, वो पास्ट टेंस है. राइट नाउ इन दिस मोमेंट, आंखें बंद है, मैं पूछ रहा हूँ क्या मौजूद है, कुछ क्या ठंडा मौजूद है दीपक? हाँ, कुछ ठंडा सा ऑब्जेक्ट है हाथ में। एक ठंडा सा ऑब्जेक्ट है, एक ठंड का अनुभव हो रहा है आपको, एक ठंड का एहसास हो रहा है. राइट, ठंड का एहसास हो रहा है. और ऐसे ही हाथ में रखिए, रगड़िए मत, जस्ट हाथ में रखिए ऐसे सामने हथेली में, और आप कहेंगे कि एक ठंड और एक वजन का अनुभव हो रहा है. तो अगर आप पास जो है भूल जाएंगे, इसी वर्तमान में, इसी पल में आप, मैं पूछूंगा कि व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज प्रेजेंट राइट नाउ, व्हाट इज प्रेजेंट राइट नाउ. आप कहेंगे कि एक ठंडेपन का अनुभव है प्रेजेंट. और हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस। somebody said there's no voice. Okay. ओके, एक ठंडेपन का अनुभव है और एक थोड़ा सा वजन का अनुभव है. यस. यस। तो दूसरे कुछ अलग अलग एविडेंस को ना देखते हुए, हम सच्चाई को अगर जानना चाहते हैं, तो हमें आधार अपने विचारों पर या अपनी बिलीफ्स पर या अपने नॉलेज पर नहीं रखना है. द बेस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रूथ इज आवर एक्सपीरियंस. जो अनुभव हो रहा है वही सच है, बाकी सब हम नहीं मानेंगे. तो करेक्ट। क्योंकि बाकी हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं, लेकिन अनुभव कर रहे हैं तो ये सच है. तो सच्चाई को
100% अगर हमें देखना है कि अनुभव के तौर पर क्या मौजूद है, तो हमें ये आइडिया ऑफ पत्थर को साइड पे रखना पड़ेगा और यही कहना पड़ेगा कि मौजूद है एक वजन का अनुभव और मौजूद है एक ठंडेपन का अनुभव, यही मौजूद है। दिस इज व्हाट इज प्रेजेंट। ओके, सो अभी हम आंखें खोलकर उस पत्थर को देखेंगे। देखिए पत्थर को, देखिए पत्थर को नहीं, ये जो भी है आपके हाथ में उसको हम देख रहे हैं। पत्थर हमने अभी साइड पे रख दिया है, मतलब हाथ में है लेकिन वो आइडिया को हमने साइड पे रखा है और हम उसे देख रहे हैं। और अभी मैं अगर पूछूंगा कि क्या मौजूद है, व्हाट इज प्रेजेंट, नाउ अगेन फॉरगेट ऑल योर आइडियाज, योर लेबल्स, योर नॉलेज, एंड आंखों को मैं पूछूंगा कि क्या मौजूद है। एक गोल आकार और सफेद लाल काला कलर। करेक्ट, एक आकार है, कुछ कलर है, और आकार भी है या नहीं हम नहीं कह सकते हैं। हम सच्चाई को अगर 100% जानना है, देखना है, तो हम कहेंगे कि एक आकार का अनुभव हो रहा है। आकार है या नहीं वो भी हम बता नहीं सकते, लेकिन आकार का अनुभव जरूर हो रहा है। एक आकार का अनुभव हो रहा है, एक आकार का अनुभव हो रहा है, वजन का अनुभव हो रहा है, और ठंडेपन का थोड़ा सा हो सकता है। अभी हाथ में रहकर अभी ये पत्थर ठंडा भी नहीं है, आपका ही गर्म हो गया टेम्परेचर अभी। हो गया। हाँ, अभी आपका ही टेम्परेचर हो गया। तो एक वजन है और एक आकार है और कुछ कलर है। इसका ब्राउन कलर है, किसी के रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है, व्हाटएवर। एक कलर का अनुभव हो रहा है। यस एवरीवन, ओके। यस, रफनेस है, स्मूथ है। हाँ, वो टच से, टच अगर हम इसको आंखें बंद कर कर इसका सरफेस को हम अगर उंगलियों से देखते हैं कि इसका सरफेस कैसा है, और अगर मैं इस सरफेस को जो अनुभव कर रहे हैं, ये टेक्सचर को, सिर्फ उसी को देखकर मैं पूछूंगा कि क्या मौजूद है, तो अभी आप नहीं कहेंगे कि पत्थर मौजूद है। अभी आप कहेंगे कि एक, अगर रफ स्टोन है तो आपको कुछ रफनेस का अनुभव हो रहा है। किसी के पास गोल या स्मूथ स्टोन है तो आप कहेंगे कि एक स्मूथनेस या गोलापन का, ऐसा स्मूथनेस का अनुभव हाथों पे हो रहा है। ओके, तो मौजूद क्या है, मौजूद क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट is all these sensations. Okay, now open your eyes, take the other stone, and again close your eyes and forget you have a stone and whatever. ये पत्थर नाम वगैरह भूल जाओ, बाकी के सेंसेशन, आंखों का, टेक्सचर का, वो भी एक साइड पे रखते हैं। अभी सिर्फ कानों को पूछते हैं, कान को पूछेंगे कि क्या मौजूद है, और ये दो पत्थर जो है उन एक दूसरे के साथ टकराइए और जो आवाज होगी उसका अनुभव करिए। जो पत्थर दो हाथों में लीजिए और एक दूसरे के साथ टकराइए। और मैं कानों को पूछ रहा हूं, मैं किसी और को नहीं पूछ रहा हूं, मैं कान को पूछ रहा हूं क्या मौजूद है। तो कान नहीं कहेंगे पत्थर मौजूद है, कान कहेंगे टकराने की आवाज मौजूद है। एक टकराने की आवाज। और टकराना भी हाथ जानते हैं, कान नहीं जानता। टकराना हाथ जानते हैं, कान को कोई टकराने के बारे में पता नहीं। कान तो सिर्फ ये कहेंगे कि एक आवाज का अनुभव मौजूद है, उसके सिवा मुझे कुछ पता नहीं, एक आवाज का अनुभव मौजूद है। आर यू क्लियर? कट कट की ओके, आवाज आ रही है। ग्रेट। हाँ, एक टकराने की आवाज का अनुभव मौजूद है, पत्थर मौजूद नहीं है, एक टकराने की आवाज मौजूद है। ओके, तो फिर से ये दोनों पत्थर को हथेली में रखिए, और अगेन ये जो हमने प्रयोग किया और ये जो प्रश्न हमने पूछे सच्चाई तक पहुंचने के लिए, ये सब याद रखते हुए मैं फिर से आपको अगर पूछूंगा, दीपक हाथ में क्या मौजूद है?
हाथ में भी नहीं, इस वक्त सामने क्या मौजूद है? दो आकार है, दो अलग अलग कलर हैं, करेक्ट, अलग अलग सेंसेशन है, एक में ठंडा है, एक में जैसा है नॉर्मल, करेक्ट हाँ, करेक्ट. सो दैट इज व्हाट इज प्रेजेंट. तो क्या मौजूद है इज ओनली ऑल दी सेंसेशंस. अनुभव के तौर पर अगर हमें 100% सच्चाई के साथ रहना है, और 100% मतलब बिल्कुल, क्योंकि आप जो पत्थर को पत्थर कह रहे हो, किसी और देश में स्टोन कहते हैं, किसी और देश में कुछ और कहेंगे, कुछ और भाषा में कुछ और कहेंगे. ये सब मतलब अलग अलग अभिप्राय हो सकते हैं कि ये पत्थर है, ये वो है, ये स्टोन है. कोई केमिकल इंजीनियर को पूछेंगे या केमिस्ट को पूछेंगे ये सिलिकाट, बोरेट, ऑक्साइड, फॉस्फेट है. किसी फिजिसिस्ट को पूछेंगे तो बोलेगा कि ये बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है विद आवर क्वांटम मैकेनिज्म. ये सब सारे अलग अलग अभिप्राय आएंगे कि क्या है. लेकिन कोई इस बात को डिसएग्री नहीं करेगा, चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हैं, ये सब बोलेंगे कि एक अनुभव मौजूद है. एक वजन का, एक टेम्परेचर का, एक आकार का, एक शेप का, एक टच का, एक अनुभव मौजूद है. तो ओनली द एक्सपीरियंस इज प्रेजेंट. द स्टोन्स आर नॉट रियली प्रेजेंट. द ये जो स्टोन्स है, इसको हमने एक कंक्लूजन किया है. कानों ने कुछ कहा, आंखों ने कुछ कहा, मन ने कुछ कहा, ब्रेन ने कुछ कहा, सबको सबको मिलाकर हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है. ये लेबल अनुभव के तौर. हाँ, लेबल एक लेबल लगा दिया, एक लेबल बनाया, लेकिन वो लेबल तो है नहीं. नहीं है. What is present is that sensation, that experience is the only thing. मतलब जो कहते हैं ना, मैं सीने पे ऐसे हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये सेंसेशन प्रेजेंट है. राइट. पत्थर प्रेजेंट है या नहीं मैं नहीं कह सकता. आई एम 100% श्योर that there is a shape, there is a feeling, there is a size, there is an experience. So, in other words, even with our eyes open, now when we look at the stone, see if you can drop the label, drop the words, drop the idea, drop the concept, and simply be with this experience of sight, of texture, of temperature, of weight, directly just with that. In other words, हम ये कह सकते हैं, अगर ये सब मौजूद है और पत्थर नहीं है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पत्थर गायब हो गए, पत्थर है ही नहीं. What is really and 100% true is only my experience of this. अच्छा, अभी इस बात को और आगे ले जाते हैं. तो एक तरफ से हम कहते हैं कि ये अनुभव मौजूद है. तो इसकी सच्चाई क्या है? अनुभव जो मौजूद है उसकी सच्चाई क्या है? ये हम प्रश्न आगे ले जाते हैं. तो किसी एक अनुभव को लेते हैं, जो कानों में आवाज थी, उस अनुभव को वापस एक बार फिर देखते हैं. तो आंखें बंद करिए और फिर से पत्थर को टकराइए, आवाज सुनिए, और मैं ये प्रश्न जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए. ये आवाज जो अभी सुनाई दे रहा है, उस आवाज को सुनने वाले आप जो है, ये आवाज कोई सुन रहा है? यस और नो? यस. ये आवाज है और कोई सुन रहा है. कोई कर भी रहा है, कोई सुन भी रहा है. हाँ, कोई सुन रहा है. अभी हाथों को हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ कान को पूछ रहे हैं कि कान, ये आवाज जो तुम्हारे पर आ रही है, वो कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? कोई सुन रहा है. सुन रहा है. यस,
कोई सुन रहा है? और एक प्रश्न, अगर सुनने वाला जो है, वो अगर नहीं होता तो ये साउंड का कोई अस्तित्व है क्या? If that listener of this sound was not present, is there any reality, existence of the sound at all? Can the sound exist in the absence of the listener? The listener is not present. Will the sound remain? No. So what is really present? What is really present? What is really present, which you know 100% sure? 100%. I don't want a 50% chance है, नहीं है. 100% अगर आपको मैं पूछूं कि what is present, the only answer you can give for 100% sure is the listener is present. The listener is definitely present. Because the sound can come from a stone. Maybe it is a stone, maybe it is something else. Maybe the sound is not even being produced. Now pause for a minute and remember the sound. Don't पत्थर को अभी साउंड मत करिए. जो पत्थर का साउंड आ रहा था कुछ पल पहले, वो साउंड को याद कीजिए. सुनाई दे रहा है वो आवाज? सुनाई दे रही है आपको वो आवाज? सुनाई नहीं, आपके मन में जब आप उस साउंड को याद करते हैं तो वो साउंड आपको याद आ रही है. यस, आपको सुनाई दे रही है कान में. बिल्कुल. तो बिल्कुल. तो अभी जो ये साबित हो गया कि आवाज के बिना भी वो अनुभव आपको हो रहा है. Yes. तो what is the most important and the most required कि what is, जो अनुभव हो रहा है उसके लिए एक चीज तो होना जरूरी है ही है. बाकी चाहे हो ना हो, पत्थर चाहे हो ना हो, कोई टकराता हो ना हो, वो जो सुनने वाला है, वो सुनने वाली जो जागृति है, सुनने वाली जो ऊर्जा है, सुनने वाली जो अवेयरनेस है, वो यकीनन 100%, 100% मौजूद है और वो ही है. तो हम अगर सच्चाई को 100% कहना चाहते हैं कि क्या मौजूद है, what is present, then the only thing we can say for sure is that I am present. When I hear a sound, the only conclusion I can make is I am present. When I see this object in my hand, I make the false conclusion that a stone is present. It is a truth at an intermediate level. At an intermediate level, a stone is present. But at a real level, at an actual level, at an absolute reality, 100% without any shadow of doubt, only I can say that I am present. I am present. I am present. Please, everyone, allow this to sink in. I am present. आज I am समझ present. कॉलेज में जो प्रेजेंट सर बोलते हैं उसका मतलब क्या है? Exactly. Are you present? Are you there? I am present. We look at things and think that that thing is present. हम चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि वो मौजूद है. अभी पत्थर से हम आगे ग्रेजुएट होते हैं थोड़ा. हम सुपर we graduate further. Whatever ये जो प्रयोग हमने पत्थर के साथ किया, वो प्रयोग हम दुनिया भर की किसी भी चीज, anything, any experience, we can take any of that and go through the same exercise and we will come to the same conclusion. What is the conclusion? What is present is only I. I am the only
presence that is really present for 100% sure at a level of experience, at a level of understanding. Everything else is simply conjecture. एक जादू की छड़ी घुमाकर हम कहते हैं कि पत्थर मौजूद है, लेकिन असलियत में कोई पत्थर है ही नहीं, कोई पत्थर नहीं है, कोई इमारत नहीं है, कोई सागर नहीं, कोई दरिया नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई संजीव नहीं, सिर्फ मैं हूं। यहाँ भी मैं, वहां भी मैं। यहां भी मैं, वहां भी मैं, सिर्फ मैं। I am the only presence in the universe. I am all there is. So now we are going to make a leap. Hold that stones, the two stones in your hand. I'm going to ask you the same question again. Take the two stones in your hand. And I'm going to ask you at an absolute level now, what is present? I am present. I am present. Notice that now you're not saying the stone is present. एक पत्थर है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि मैं हूं. हाँ राकेश, उस पर हम आते हैं. So it is I am present. Now let us close the circle. So this stone is actually I that is present. But this I in this moment in your hand has taken what form? It has taken the form of a stone. It has taken the form of the stone. It has taken the sound of a stone. It has taken the roughness of a stone. It has taken the smoothness of a stone. It has taken the color of a stone. That I has taken a color of this form and is now showing up as a stone. So the truth is not that the stone is not present. The real truth is that I am present right now in the form of a stone. So now we close the circle. So we started with a stone and nothing else is present. Then we came to पत्थर नहीं है, मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, हर जगह, हर चीज, हर तस्वीर, हर व्यक्ति, हर नाम, पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ मैं ही मैं। वो एक आधा, that is 50% of the journey and the most difficult part of the journey. The easy part of the journey is now coming back, closing the loop. Closing the loop when I say, यार एक तरफ से तो ये मौजूद है, पत्थर है मेरे हाथ में, कुछ है, आकार है, एक कलर है, और दूसरी तरफ से मैं देख रहा हूं तो सिर्फ मैं हूं। तो सच्चाई ये है कि मैं इस पल में, इस रूप में, इस स्वरूप में प्रकट हूं। तो आज तक जो पत्थर था वो सच्चाई को छुपा रहा था, मेरी असलियत जो है उसको छुपा रहा था। ये सारा ब्रह्मांड असलियत को छुपा रहा है, क्योंकि जब मैं ये सागर या ये दरिया या ये इमारत को देखता हूं या हर्षा को देखता हूं तो ये लगता है कि ये मौजूद है, मैं नहीं हूं। ये लगता है कि वो मौजूद है, मैं नहीं हूं। लेकिन आज अभी जो ये प्रयोग किया तो पता चल गया कि वो मौजूद नहीं है, मैं मौजूद हूं। और अभी the final step is ये मौजूद है, लेकिन इसकी असलियत मैं हूं। बाहर से एक ऊपरी क्या बोलते हैं उसको, आवरण, पॉइंट ऑफ व्यू को क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण। हाँ, एक ऊपरी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो पत्थर मौजूद है,
गहराई से देखेंगे तो सिर्फ मैं हूं, लेकिन और भी गहराई से देखेंगे तो ये भी है। तो ये क्या है फिर? अगर ये पत्थर भी है और मैं भी हूं, तो एक ही बात सही हो सकती है कि ये जो है वो मेरा ही एक स्वरूप है। मैं इस रूप में दिखाई दे रहा हूं, मैं इस रूप में प्रकट हो रहा हूं। तो ये जो पत्थर को पहले हम एक ऊपरी दृष्टिकोण से देखते हैं तो सिर्फ पत्थर दिखता है, लेकिन अगर हम ये सच्चाई को और ये जानते हुए अगर इस पत्थर को देखेंगे तो हम और गहराई से देखेंगे तो ऊपरी स्तर से पत्थर दिखेगा, और अंतर से देखेंगे तो पत्थर ही नहीं, मैं दिखूंगा। मैं यानी कॉन्शियसनेस, मैं यानी अवेयरनेस, मैं यानी ईश्वर, डिवाइन, लॉर्ड, गॉड, जीसस, कृष्णा, अल्लाह, whatever name you want to give. Then I see the stone, but I don't just see a stone anymore. I see divine. So, 10 minutes. 10 minutes. Yeah, you go in an umbrella. You go under the shade. There's shade in the restroom. Whatever. 6.99. Anyway, whatever. So, A so equal now, to B. It's like A sorry, equal to B equal to B equal to C. So A equal to C. A equal to C. Exactly. A equal to C. And not only A equal to C, C equal to A. Right. So now, now we go to the essence of all there is. वो ही है, बस वो ही है, वो ही है, बस वो ही है, वो ही है, बस वो ही है। जहां जहां देखूं वहां वो ही है, मुझ में वही है, तुझ में वही है, मैं भी वही हूँ, तू भी वही है। So now we get to the point of making the Atlantic city disappear. जहां जहां देखूं वहां वो ही है, पत्ते में वही है, सागर भी वही है, हवा भी वही है, बादल भी वही है, ये स्काई स्क्रेपर भी वही है, कसीनो भी वही है, कसीनो में वो ही है, इमारत में वो ही है, स्पीकर में वही है, ये पत्तों में वही है, वही इस है। शख्स में वही है, मुझ में वही है। तो वो पूजनीय है, मैं भी पूजनीय हूँ, और मैं पूजनीय हूँ, वो भी पूजनीय है। और मैं ही सब कुछ हूँ, वो ही सब कुछ है। राइट। दोनों, सब कुछ भी वही है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है और सब कुछ वही है। So so Rakesh, you understand what we are saying now? तो बंद आंखों Okay. में मैं हूँ, और खुली आंख से जो है वो भी मैं हूँ। वो भी मैं हूँ, वेरी परफेक्ट। खुली आंखों से भी मैं ही हूँ। तो आप अभी आपका दृष्टिकोण बदल सकते हैं। जहां भी आप जाते हैं, जो भी आप करते हैं, जिसको भी आप देखते हैं, जिसको भी आप देखते हैं, जो भी आपको सुनाई दे रहा है, वो और कुछ नहीं है, वही है। वही इस रूप में, इस आकार को लेकर, इस कलर को लेकर, इन शब्दों को लेकर वही अनुभव प्रकट हो रहा है, और अनुभव करने वाला भी वही है। तो और कुछ, डांस ऑफ शिवा। डांस ऑफ शिवा, ऑल इज डांस ऑफ शिवा, ओनली डांस ऑफ शिवा, शिवा dancing alone and creating the universe and dancing in the universe, and you are that Shiva. So you see
In this way, the whole world disappears. The universe disappears. ये डेविड कॉपरफील्ड तो कुछ भी नहीं है, ये क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब किया? हमने सारा ब्रह्मांड गायब कर दिया। ब्रह्मांड गायब कर दिया। हमने उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे पर्दा डाल दिया, हमने इस ब्रह्मांड का पर्दा फाश कर दिया। तो so now next step is to live like this. ये अंडरस्टैंडिंग तो सही है, ये जानना सही है, ये थोड़ा अनुभव भी कर लिया आपने, लेकिन आगे का स्टेप है इस तरह से जीना, लिविंग इन दिस वे। That is जीवन, शून्य अवस्था। Yeah, living like this. Whenever you see anything, whenever you're speaking to somebody, you're not speaking at one level. I'm speaking to all of you right now. I'm speaking one-on-one with Deepak. Who am I really speaking to? I'm speaking to the I. I'm speaking to divine, and I'm speaking to myself, which is the I. And who is speaking? The divine, only I, speaking to the I. And if you remember this, no matter who you are speaking with, every conversation of yours will be loving, will be gentle, will be full of grace, full of love. Automatically, because you are aware. ये दिखता है कोई विलन बोल रहा है, या कोई कुछ भी दिखाई, भले कुछ भी दिखाई दे, भले कुछ भी सुनाई दे, याद करना, what is present is only I. Is only I talking to I. Then when you are talking to the villain also, your whole attitude is different. Your whole approach. Sorry? मेरा ही प्रतिरूप, मेरा ही प्रतिरूप मुझसे बातें कर रहा है। अगर जैसे आपका बच्चा अगर आपसे बात कर रहा है, तो आप कैसे प्रेम से बात करते हो? चाहे वो शरारत कर रहा हो या कुछ अच्छी बात कर रहा हो, शरारत भी कर रहा हो तो भी आप प्रेम से बात करते हैं उससे। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। आपका बच्चा शरारत करेगा पड़ोसी के घर में, तो वो पड़ोसी उतने प्रेम से बात नहीं करेगा उससे, वो कहेगा अरे क्या है ये, बंद करो। बट आपका बच्चा जब आपसे बात कर रहा है, तो क्योंकि वो आपका बच्चा है, वो शरारत आपको शरारत नहीं लगती, आपका प्रेम मौजूद है और आप प्रेम से पेश आते हो उसके साथ। तो उसी तरह से जो लगता है विलन, वो आप ही हो। अगर समझ जाते हैं, जान जाते हैं और अनुभव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैसे पेश आएंगे उसके साथ? You will automatically come forth with love, with joyousness, with peacefulness. You understand? You will come forth with divine presence and with divine love. You will not, your whole interaction will change. Your entire demeanor will change. Your attitude changes. Your approach changes. Your experience changes. Even though the person is the same as before, it is still that शरारती बंदा जो विलन है आपके लाइफ में। हर एक की लाइफ में एक दो विलन तो होते ही है। तो क्योंकि कहानी नहीं बनती है ना भैया, कहानी नहीं बनती। सॉरी, मेरा ही रोल है अलग अलग रूप में, आपका ही रोल है अलग अलग। और अगर आपके लाइफ में विलन नहीं है, तो उसका मतलब है आप ही विलन हो। क्योंकि विलन के बिना कहानी होती नहीं है। तो ये जानना जरूरी है, और जानना, अनुभव करना और इस तरह से जीना। तो so now hold the two stones in your hand. I want everyone to hold the two stones in your hand and take a pledge. Take a pledge. Take a pledge that from इस पल के बाद मैं इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानते हुए जीऊंगा। इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानते हुए जीऊंगा। Beautiful, 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 wonderful. Everyone just type in the chat box,
I will live my life knowing and experiencing the truth of this universe. From now on, I will live my life knowing and experiencing the truth of this universe. It's like a transformer के मेरे से ही सब energy create हो रहा है. Exactly. Exactly. I will live my life knowing and experiencing the truth of this universe. Beautiful. Julie, thank you. Everyone, just type. Everyone type. I will live my life knowing the truth. What did I say? Experiencing, live. I will live my life. What Julie said was what I said. I will live my life knowing and experiencing the truth of this universe. Tathastu, tathastu, tathastu. Sadhu, sadhu, sadhu. And my blessings to this pledge that you all taken today. My blessings that you all live this way from this moment on. No matter what person you interact with, no matter what thing you interact with, your clothes, your आपके बर्तन है या आपका फोन है या आपका कंप्यूटर है या आपकी गाड़ी है या आपके कपड़े हैं, all nothing but divine in that form. And knowing that it is divine in that form, how will you treat it? How will you, कैसे पेश आएंगे उसके साथ? हर एक चीज के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक अनुभव के साथ, हर एक पल के साथ. Beautiful, wonderful. Thank you, thank you, thank you. And so now we'll open it up for any questions that anyone has. Yeah, everyone. Yes, sir. Sorry? If you have any questions, Practical please life में raise your hands. जो so called villain है उनके साथ में कैसे पेश आएंगे, यही सवाल है मेन. तो बाकी सबसे तो प्रेम से पेश आ जाएंगे जिनके साथ में अभी तक नहीं आते थे. लेकिन जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है निगेटिविटी की या एग्रेशन की, वहां पर मन से तो प्रेम हो जाएगा, बाहर ऊपरी रूप से. हाँ, ऊपरी रूप से जो चाहे करो. मान लो आपका बच्चा शरारत कर रहा है, ओके. मान लो कोई हल्की सी शरारत है, चलो आप प्रेम से बात कर लेंगे उससे. कोई गहरी बड़ी शरारत है, पत्थर फेंक रहा है आप पर, क्या करोगे आप? अरे भाग जाओ वहां से, चले जाओ, एक कुछ रख दो बीच में, या चले जाओ, या बंद कर दो कमरा. See, operating out of love does not exclude anything. It does not exclude defending yourself. It may even include attacking. Supposing somebody is coming at you with a knife. विलन का रोल है नाइफ लेके आना तुम्हारे सामने. आप हीरो है भैया, हीरो है तो उसको रोको. रोको उसको, भाग जाओ, या भाग सकते हो तो भाग जाओ, नहीं भाग सकते हो तो रोक लो. और जरूरत पड़ी तो आपके पास भी जो हथियार है वो निकाल लो और उपयोग कर लो. But knowing at the same time, knowing nothing but divine. Nothing but divine. The deep sense of divine. Nothing but divine. Even that villain, that knife, your knife, their knife, everything showing up in this form, in this form, in this form. It does not exclude anything, right? It does not mean we become doormats or walkovers, or people can run slipshod. Aisa nahi hai, because you love yourself. And Right. you are also divine. You are Right. also precious. Your body is also precious. You must defend yourself. You cannot simply allow that to your body to be damaged. Right. Because you love that body and it is divine and you must protect it. So this understanding has to be 360 degree. Correct. 360 degree. अगर इसको आप 270 degree पे आके रुक जाओगे तो ये सब problem आते हैं, and people become passive, and people become inactive, and people become non-productive. Doesn't mean that. 360. Full creativity, full productivity, full engagement in the world, Right. fully participating with the world. Right. See, when you only take half the step, लगता है कि ये वैराग्य है, मिथ्या है, सब छोड़ दो इसको. But when you take the full circle, you come back.
Take the second round and say that, अरे अगर ये business जो हम कर रहे हैं वो भी divine expression है. Right. Then do the business fully. Fully. Let the business expand 100 times, million times. No problem. No problem. Because everything is divine doesn't mean I leave the business and leave my family and go to a cave. At all. That is only half knowledge. Half knowledge. The full knowledge is you come back to the same world. But armed with this new understanding. And now your whole interaction is different. Your whole approach is different. And all activity is possible. All activity is beautiful and wonderful and allowed and acceptable. So can I say like this? Zen master की एक story में कहा था उन्होंने कि भाई आप Zen master बनने के पहले क्या करते थे? बोले खड्डा खोदता था. और Zen master बनने के बाद क्या करते हो? बोले खड्डा खोदता हूँ. Exactly. But वो कहानी जो है वो सच है, बिल्कुल सच है ये. Before enlightenment, chopping wood, fetching water. After enlightenment, chopping wood, fetching water. Very true. But understand that there is a जमीन आसमान का फर्क है. बाहरी रूप से हो सकता है सरीका दिख रहा है. Right. But now when you're chopping wood, you're aware of divine presence. Divine presence is taking a divinity in the form of an axe, and divine presence experiencing the lifting of the axe, divine presence experiencing the falling of the axe, and divine presence chopping the wood. Correct. And the wood is also nothing but divine presence. Right. I mean, it's a whole different experience. It's a whole different experience. To put it in very common language or common terms, let's say you go to see a movie and the movie is a lousy movie and you don't at all enjoy yourself. लेकिन मान लो आपका पहला प्यार है, आप कॉलेज में हैं, पहले प्यार से आप मिले हो और वो आपका पहला प्यार कहता है कि चल यार मूवी में चलते हैं. वही मूवी, वही बकवास बंडल मूवी, मलयाली होगी तो पहले भी वही मूवी, अब भी वही मूवी. वो अब वाली जो मूवी है वो वाह वाह वाह. आप दोस्त आके पूछेंगे आपको कि यार मूवी कैसी लगी, अरे यार क्या मजा आया, मेरे तो फवारे फूट रहे मेरे दिल में से. So I really enjoyed the movie. So before enlightenment, bad movie. After enlightenment, same movie, but the whole experience is different. Why? Because you are different. Right. Your point of view is different. Your approach is different. Your being is different. Your aliveness is different. Your whole experience changes. Correct. So अभी चाहे कमरा बंद कर दो, पत्थर से बंद कर दो, आप खुद चाकू निकालो, कुछ भी करो. It's all part of that new movie when you are in love. And what are you in love with now? You are in love with divine. Love with divine. Correct. और वो जो रोमांटिक वाला लव है तो कभी कभी मिलता है, कभी मिलता है. 5 बार फोन करो तो 1 बार फोन उठाते हैं. वैलेंटाइंस डे कार्ड भूल जाओ तो 10 दिन तक हमें भूल जाते हैं. बर्थडे भूल गए तो पता नहीं 1 महीना. तो so nothing wrong. I'm not at all against romance and all that. Beautiful. It's also an expression of lovingness. But this lovingness which we are talking about is available 24/7, 365. Any moment, every moment, in each and every object, in each and every person, in each and every experience, in each and every event of your life. So you can be in love, be in love, be in love. Yes. Like a child, वो एक धागे से भी खेल के खुश रहता है. Exactly. Be in love because this lover of yours is present everywhere. Right. And is in fact you, yourself, your innermost self, is never separated from you for even one moment. Right. So now when we are in love, the whole life changes.
So operate out of love. Be in love. Be in love with everything because you are everything. So Good. still Any other questions? yeah, so that means that still we will fight, we will protect ourselves, we'll defend ourselves, Yes. but the whole Abs- ingredient inside will change. Absolutely. 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 And my experience to you, which I want to share is कि when you start operating like this, वो fights आते ही नहीं है, कम हो Right. जाते हैं, वो Correct. fights ही कम हो जाते हैं, वो विलन खुद अपनी देवत्व को खुद देखने लगता है ये लगता है. और वो खुद विलन बनना छोड़ देता है. Right. And it happens more and more and more. Correct. And it's a process, it's a journey, it's not a one-shot deal. But that is what my experience is, that this is what happens. Yes. Yes. But what In if the fact, other not only that, person? Deepak, I will tell you, magic happens. Magic, absolute magic, miracles, moment to moment. I was at a park in Canada 2 days ago, and being at the park itself was just happened. But as we were going to the park, I said to myself, "Arey yaar, hope there is a little pond or something, and I hope there is a turtle, and I hope there is some wildlife, and hope there is a swan, and hope there are some fish in the water, and hope it's nice and quiet." Aisa hi maine, just a momentary thought in my mind. And I had no clue what was in the park. We enter the park, and as we turn around one corner, beautiful pond, and that bird just said something to us Right. just now. Structure. Yeah, it was a signal. To me, it's a signal. But a pond was there, and we approached one mother duck with 6 little chicken ducks walking in a row. Not one turtle, many turtles, including baby turtles in the pond, goldfish in the pond. And I had said, "Arey yaar, swan ka bhi maine kaha tha." You will not believe, in 30 seconds, 2 swans appeared out of nowhere. Wow. 2 white, beautiful swans just coming like a parade. One couple, they are always a couple. They came and they were sitting right in. And then I turned, मेरा cousin था मेरे साथ, Raju. I said, "Raju यार, ऐसे माहौल में तो एक गिटार होना चाहिए और कुछ गाना होना चाहिए. Okay?" And I said, "Yes." And I said, Raju says, "अरे यहाँ गिटार तो इंडिया में है, अभी गिटार कहाँ से आएगी?" I said, "चलो कोई नहीं." And we went for a walk. We walked around the pond. And as we came around the pond, sitting under the tree was a guy playing a guitar. Oh. Guy playing a guitar. We go to the guy and said, "Oh, play something for us." And I said, "I also play." But he said, "You know what? I only know Hindi songs." But he said, "Can you believe it?" And I said, "Bhai, wohi to hame sunna hai, hame kaun sa Angrezi sunna." And he says, "I only sing Hindi song." And Harsha loves Arijit Singh. And that he says, and not only that, I only know Arijit Singh. and that is her favorite singer. So he sang, what song did he sing? वो क्या था? हाँ, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, यहीं रुक जा जरा. Right. So he sang that song. And Right. then Raju says, "Well, you also play something." So he willingly and he said, yes, you please sing. So he gave me the guitar. And of course, I sang 1 or 2 of my favorite. और गाते गाते और लोग इकट्ठा हो गए. And it became a little concert. Right. So what I'm saying is, not just the villains disappear, but miracles appear. Miracles appear. Right. So let's, I believe this. Yeah. So be in this beauty, be in this love, and we live with a silent prayer, which is nothing but being in this presence of this Beautiful nature. beautiful nature.
Okay, there are a few questions. Oh on my the chat goodness, I box. don't know I'll if I have just time, read but it. okay. Yeah. Okay, so if we be in love, will that raise expectations from other person, which could be strenuous for me? So let me ask you this. Who is asking? This is Himangi. Himangi Bhavsar. Yeah. Himangi. Himangi, let us say you meet this person who you fall in love with. You fall in love with the person. Will you ask this question? Will you ask this question that, oh, if I express my love for this person that I love, their expectation will rise and it will become strenuous for me. Will you ask that or think that, or will you simply be in love? No, I will simply be in love. Exactly. Exactly. Could Exactly. you put the camera on you, Sanjivji? Yeah. Yeah. Yes. No, I won't. I have time. So yeah, so that's what it is. It's you'll simply be in love. And that Jennifer G is here. She's here, she is here. Yeah. Right. So you got it, Himangi? Got the answer. Yeah. So that's what it is. Same thing. Same thing with divine love, Himangi. You just be in love. That's it. You can't help it anyway. Once you understand and experience this divine love, you can't help it. All questions will disappear, right? Not just, yeah, all these questions will disappear. You won't worry about whether this is going to be stressful or strenuous or not. You'll just simply be in love. There is nothing to say or do. Great. But Wonderful. what if Himangi, the got it? opposite person feels that I'm living in an illusion? Synchronization it is I've got called. news for you. I've got news for you. The whole thing is an illusion to begin with. It is already an illusion. So stop worrying about it's an illusion. It's already an illusion. This whole game, this whole tamasha, ye Brahmand pura ek mithya hai, maya hai. There is nothing, there is only one absolute truth, which is you are the divine and all is divine. That is the only truth. Everything else is just an appearance. So don't worry about illusions. If experience divine in the tree, then how can the axe fall on it and cut it? Sorry? If experience divine in the tree, how can axe fell on it and cut it? Rakesh Sharma. Rakesh, Yes. question. Yeah. I got it. Yeah. So we have this belief that divine is only of a certain quality, of a certain, the inherent qualities of divine are love, is of truth. The volition and will of divine is what is important. Volition and will. See, you can chop wood because you want to keep your family warm, which is an act of love. There is nothing, it's the context in which the wood is chopped, is the context in which the world happens. That is one answer. So a surgeon also pierces a stomach, and a gunda also pierces the stomach. But the surgeon's piercing is completely different. Correct. It is to cure, it is to heal, it is to love. It is an expression of love. The villain is of hate. That is one way of looking at it. The other way is that even this so-called villain, even this so-called hate, even this so-called destruction, underneath, if you keep looking lower and deeper, the final truth is only love. Even a terrorist, which seems to us like the worst kind of a action, if you look deeper, it is a misguided love, but it is a love. It is a love for their country, for their particular thought process. It may be misguided, thinking that by doing this kind of act, I'm going to get love. They don't get love. But the volition or the motivation, the motivation of a thief is also love. The love for money, a love for luxury, love for comfort, love for life. The motivation is love. So if you look deep enough, you only find love.
So the axe falling on the wood is also nothing but love showing up in different ways. The game of love being played in a million colors, in a million shapes. Black and white both are required for colors to be seen. Unless there is silence, there is no sound. Unless there is black, there is no white. But all are divine, both are divine. There is nothing else. The axe, the wood, the act, all divine. Okay, any other? So Anubha is asking, इतना प्यार कहाँ से लाएं? इतना प्यार अनुभव लाना नहीं है, इतना प्यार ऑलरेडी है जिसको सिर्फ बाहर लाना है। लाना नहीं है, प्यार पैदा करना नहीं है, प्यार उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। तू प्यार का सागर है कहा है, तू प्यार का सागर बनना सीख नहीं कहा, तू प्यार का सागर ऑलरेडी है। You are the source of love, you are love itself. So there's nothing to bring or find. इतना प्यार ऑलरेडी है जिसको हम प्रकट कर रहे हैं, बाहर ला रहे हैं। Clear? Okay. Any others? कुछ सर कुछ कहना चाहती हूँ मैं सर टुडे सॉन्ग नहीं हुआ वो ही है गाया, तू प्यार का सागर गाया हो गया वो song. This is a song of life. What I've sung is the song of love in words without music. Okay, this whole evening has been nothing but a song of love. हाँ जूली। Okay. आलोक जी कहते हैं ये सब ऐसा लग रहा है कि कोई टाइम ट्रेवल कर रहे हैं हम, अज्ञान के ब्लैक होल से ज्ञान के ब्रह्मांड में आने की यात्रा लग रही है ये। क्या बात है, क्या कहे हैं। What a beautifully so well put. Who was that? आलोक AKS. Alok, wonderful. Absolutely. Okay, And the only challenge now is to remain in this light. We have come into the light, now remain in it. And you will fall into the black hole again, but again, if it happens, remain in it. Come back. हाँ. यहाँ कोई पूछ रहा है कि if insects, एक सेकंड भाग चला गया, Insect like cockroach, something like that they were saying. What is it? If we see insects like cockroach, spider, lizard, else what should we do? भाग जाओ। Nothing. क्या बन जाओ? भाग जाओ मैं बोल रही हूँ। या भाग जाओ, उसको अपनी जगह पे रखने की जो भी कोशिश आप कर सकते हैं वो करिए। They belong in the forest, they belong in the garden, they don't belong inside the house. So keep them in the garden, but don't hate them. You don't have to hate them. You don't have to despise them. You don't have to, be disgusted. You still manage them. Because that's the role, that's the correct place and position of those insects and all. You manage them in the garden, but you don't have to feel hate. See them also as nothing but divine. Divine showing up as a cockroach. No problem. Because even if you look at a cockroach, what is actually present is not a cockroach. What is present? What is really present? या next सत्संग हम 2 कॉकरोच को लेके करते हैं। कोई आएगा नहीं, सब भाग जाएंगे। बोला 2 पत्थर ठीक है, 2 कॉकरोच, 2 I know, that's exactly what I'm getting to. So उस कॉकरोच के साथ भी यही प्रयोग अगर करेंगे, you'll come to the same conclusion. What is really present is not a cockroach. What is present is only I. There's only I. I am all that there is. Clear? Okay, somebody was saying something. Who was saying? कोई बोल रहा था, कुछ पूछना चाहते हैं। I think Anubha, you had raised your hand. Do you want to say something? Yes, I want to say something. Sir, I have experienced in my life some unconditional love. Okay, but it was, I think it was my call that I surrendered myself to a person who said that he doesn't love me. He told me that he doesn't love me, but I can't still see your continued. video. Where's your video? I'm not able to see you, Anubha. Okay. Okay. Yeah. हाँ बोलो। Yeah. So
and I surrendered to that person. It's long time back, and it was unconditional from my side, and then it continued and it ended as well. But after that, I couldn't be in unconditional love with anybody. You know, it was like give and take kind of thing. And that's perfectly okay. See, you know, whatever form To be life. in that frequency. No. See, no. Listen. Unconditional love doesn't mean becoming a doormat. No, it was not like a No, romance. I'm just saying. So it is not. So whatever shows up in the present moment is only divine presence. And your voice is breaking, but let me just say this. Whatever shows up in the present moment is only divine. If in that moment conditional love shows up, that is also divine. If in a moment unconditional love shows up, that is also divine. If in a moment walking away from that relationship shows up, that is also divine. If in that moment, no matter what, there is nothing else. Knowing this knowing this doesn't mean that you have to be or do a certain thing or a particular thing in a particular way. ऐसी कोई condition नहीं है. You understand? It's all divine play. All is divine play in whatever form it shows up. And that's all what we are saying. And you don't need to make any kind of preconditions on it in the present moment. Okay, wonderful. We'll keep more questions for next time. or actually, Jennifer ji or somebody, you can post the open door, Meera, on the link and all that details. So I look forward to being with all of you on the open door sessions, Tuesdays, Thursdays, Saturdays at 8 p.m. India time. Okay, and the link they're sending, and we can 8:30 IST. 8:30, right. I'm getting my India and US times mixed up. So yeah, 8:30 IST PM, Tuesday, Thursday, Saturday. So please come and we'll explore. That's what we do. We explore these questions in a deeper and deeper way, and enjoy. So look forward to seeing everyone. Thank you. Bye. Enjoy your Atlantic City. Enjoy. I have enjoyed. Now you enjoy. Yes. Say bye. Thank you, Sanjivji. Bye. 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 Love you all. Details of Lots of open love doors. to everyone. Lots of love to everyone. Thank you. Lots of love. Bye. Give Harsha ji the Thank phone. you, Sanjivji. Thank you very much. Great. So I Julie ji, put the इससे recording details. होगा ना? Yes, so the details are put up for open door. If you want more from Sanjivji, then definitely you can join in the group or the link, whatever is shared, just save your chat. और आइए अभी हम सेगमेंट इंटेंडिंग करते हैं. इतना बहुत ही बढ़िया हमें मिला है आज. तो पहले हम पिछले 1.5 घंटे के लिए धन्यवाद करेंगे कि धन्यवाद संजीव जी, जो हमें आज बहुत ही बेहतरीन डिविनिटी के बारे में हमें सिखाया है. तो बहुत ही आभार है कि यूएस में होते हुए भी, रास्ते पे होते हुए भी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेशन आज लिया है. सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस जूम को कि कहीं भी हो, हम कौन सी भी कोई भी दिशा में हो, हम सबके साथ दिल से कनेक्ट हो पा रहे हैं. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फिर थैंक यू अपने मेंटर गुरुजी और मनोज जी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म डिजाइन योर लाइफ का बनाया है, जिसके थ्रू हम सभी के साथ हमेशा हाई एनर्जी में रहते हैं. तो जिनको प्रेजेंट मालूम है, तो हम प्रेजेंट में हमारे ब्लॉक्स रिमूव करेंगे
I'm free from all the memories that had created a feeling of fear in me. And thank you. Now I'm operating out of nobodiness. So आज जो पूरा सत्संग था वो पूरा ब्लॉक से रिमूव कर दिया. Thank you, thank you, thank you. I love you. Sorry. Thank you. Please forgive me. I'm using one of the 4 mantras to be in awareness. And I'm living in abundance in all areas of my life. तो ये present हो गया. उसके बाद अगले 1.5 घंटे में, अभी 8:50 हुए हैं, तो अगले 1.5 घंटे में आप सभी को क्या चाहिए इस ब्रह्मांड से, तो आप खुद ही उसका निर्माण कीजिए 3 बार धन्यवाद बोलने के बाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इस तरीके से अभी आप मुझे बताइए कि रोज सेगमेंट इंटेंडिंग 50 लोग हैं यहाँ पे हम लोग, तो कितने लोग सेगमेंट इंटेंडिंग रोज कर रहे हैं हर 1.5 घंटे में. जो पहली बार आए हैं, जिनको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, जिनको जूम लिंक नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर चैट पे लिखिए ताकि हम आपको कनेक्ट कर सके, हमारी फैमिली में आपको ला सके. तो जो भी पहली बार आए हैं अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए. उसके बाद ये अगस्त महीना जो है, 18 अगस्त से 21 अगस्त को हमारा स्कोप कैंप है. 4 दिन रेसिडेंशियल जॉय शॉप है, प्रोग्राम है, जॉय शॉप नहीं बोल सकते पर प्रोग्राम है, और वो भी लाइव मनोज जी के साथ है. तो जो भी दिल से मनोज जी के साथ रहना चाहते हैं 4 दिन, बहुत सारे अगर सवाल है आपके और 1-to-1 भी पूछना है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में स्कोप कैंप लिख दीजिए और अपना नंबर लिख दीजिए, तो मैं आपको फोन करूंगी और सारे डिटेल्स आपको दे दूंगी. या आप लिया हेल्प डेस्क में भी आप फोन कर सकते हैं और उसका नंबर है 9167-499-499. यस, स्कोप कैंप आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है. लैंग्वेज इज नॉट अ बार, सो डोंट वरी. यस, और सितंबर में 8 सितंबर से हमारा द सक्सेस क्यू प्रोग्राम चालू होने वाला है. तो अगर आपको अपने विजन्स, जैसे ये मिरेकल्स आज संजीव जी ने कहा कि मैंने जो सोचा वो तुरंत मुझे वहां पे मिला, पॉन्ड मिला, स्वॉन मिला, ये मिला, मतलब मैंने सोचा और वो मैनिफेस्ट हो गया. तो अगर आपको भी वो स्थिति में पहुंचना है तो द सक्सेस क्यू प्रोग्राम इज द मोस्ट wonderful program which will lead you to that स्थिति. And I agree with संजीव जी, क्योंकि मैंने खुद वो अनुभव किया है कि मैं सोचती हूँ और वो हो जाता है. इसमें एक कैच है कि अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो वो भी हो जाता है, और पॉजिटिव सोचती हूँ तो वो भी हो जाता है. तो हमें हमारा जो कॉन्शियस माइंड है या हमारी जो अवेयरनेस है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है कि जो भी हम डाल रहे हैं वो सकारात्मक है या नकारात्मक. नहीं तो ये जो लाइफ है वो बहुत ही मिरेकल्स की तरह काम करता है. जो चाहिए, जैसे मनोज जी का वीडियो था आइसक्रीम का, तो मैंने वो बैठे बैठे यहाँ पे निर्माण किया और वो भी फ्री में मिला मुझे, और दोनों सेम फ्लेवर मिला जो वीडियो में था. तो इट इज लाइक मैजिकल वर्ल्ड. मिरेकल्स जो संजीव जी ने आज के सेशन में कहा, इफ यू सी डिविनिटी इन ऑल, ये जो साधना जो मनोज जी ने दिया है, जो टूल्स हमें दिए हैं, 161 टूल्स जो हमें दिए हैं, आप वो सभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं लिख के गारंटी के साथ
मैं कह सकती हूँ कि यस, आपकी जो जिंदगी है, यू विल फाइंड मिरेकल्स एवरीवेयर, डेफिनेटली। फिर कोई एक विलन जो मूवी आई है वो भी नहीं मिलेगी आपको, और सिर्फ प्यार ही प्यार मिलने वाला है आपको, दैट इज फॉर श्योर। So yes, how many of you agree with that? I'm sure most of you have experienced this. बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा, तो how many of you agree with it? Write A on the chat box. Wonderful. Super. Yes, very nice. Yes, तो प्लीज द सक्सेस क्यू प्रोग्राम कीजिए और अपनी जिंदगी को मैजिकल बनाइए। फिर अगर आप कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में अगर दिक्कत है तो मैजिक ऑफ मैरिज है, जो भी समस्या है उसके लिए प्रोग्राम हमारे पास है। फिर वो कोई भी हो, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक, जो भी चैलेंजेस, जो भी समस्या है, उन सब का हल हमारे पास है। तो इधर आप जो भी चैलेंज है, आप लिया हेल्प डेस्क में फोन कीजिए, आप अपना चैलेंजेस ओपनली शेयर कीजिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर पेट का दर्द है तो हम बताते हैं कि पेट का दर्द है, हम ये नहीं बताएंगे कि सर का दर्द है, नहीं तो गोली जो देंगे डॉक्टर वो उल्टा पुल्टा होगा। तो यहाँ पे भी अगर जो भी समस्या है, अगर आप खुल के दिल से ये फैमिली को अपना के आप शेयर करेंगे, तो आपको जो टूल दिया जाएगा वो भी बढ़िया, उसी के हिसाब से वो टूल दिया जाएगा कि आप वो समस्या से बाहर आ सके। Whether it's So, yes. money, whether it's relationship, like how Absolutely. Julie ji said, anything, it can be anything. फिर वो समय हो, धन हो, संपत्ति हो, संबंध हो, या पैसा हो, हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो। मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स किए, वो सब लोग यही सिखाते हैं, पर मनोज जी जो देते हैं वो सॉल्यूशंस के साथ देते हैं, टूल्स के साथ देते हैं, और इतने आसान टूल्स के आपको कहीं कुछ खरीदना नहीं होता है, या कुछ इतने पैसे नहीं वेस्ट करने पड़ते हैं। सब एवरीथिंग यू गेट इट ऑन द प्लेटर। तो वो जो महाराजा भोग है, 56 भोग है, जो भी आप बोलते हैं, वो आपको एक ही प्लेट में दिया जाता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो लिया हेल्प डेस्क भी आपके लिए है। तो कभी भी एनी टाइम 7 to 9 के बीच आप फोन कीजिए, और नहीं तो हमारे टीम मेंबर्स तो हमेशा आपकी सेवा में है, आप किसी को भी फोन कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का सत्संग, अगर किसी को और भी कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो कल हमारा एक प्रोग्राम है सेल्फ लव के ऊपर है। खुद को अगर प्यार करोगे तो बाकी सबको आप प्यार कर पाओगे। तो प्लीज वी कैन, कल भी 7 बजे आप आ जाइए। उसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू। अगर और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन क्लोज फॉर द डे। Yes, Arun ji said, thank you. Yes, Sanjivji ji, great. Yes, so we can sign off with this. Sure. Great. Thank you. Thank you. Lot of love and Shubhratri. See you all tomorrow in the TV channel. Shubhratri, Jai Hind, and lot of love from Julie and me and उषा Manoj जी, ji आप and क्यों Guru नहीं ji. आ रहे हो स्कोप कैम्प के लिए? आप She's अभी abroad. यूएस में नहीं हो? इतना, हाँ She's अच्छा, आपका वो पर्यूषण है। ओके ओके, करेक्ट। नहीं मेरा पर्यूषण नहीं है। नहीं है? आई एम नॉट जैन, नहीं आई एम नॉट तो जैन, फिर क्यों नहीं आ बट रहे हो? आई एम इन यूएस और टाइमिंग एंड एवरीथिंग इज नॉट अच्छा, फिटिंग इन दिस, सो इट्स नॉट वर्किंग आउट। ठीक है, कोई बात तो नहीं। बाकी सब मैक्सिमम व्हाटएवर आई कैन एडजस्ट विद द टाइमिंग्स आई एम जस्ट डूइंग इट। वंडरफुल, वेरी नाइस। Really enjoying Yes. with you all. Really enjoying. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। great. यस, कल मिलते हैं। See you tomorrow. Shubhratri. Jai Hind. Good night.